Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. As you all know, recording is in progress, and we are studying IGCSE and O-levels entire syllabus. And in this very session, we have learned some very important chapters along with the past paper worksheets. And this chapter, let me tell you, boys and girls, is very underrated. बहुत underrated word किसके लिए use करते हैं ज़ोया अज़हर? I mean, where do you fix this very word called underrated? Can you please describe this word, Zoya? Where something needs to get more prioritized. I can't hear you, Zoya. I can see the screen is like popping, but it was not clear. So when something needs to get more prioritized. Priority. So this chapter, yes, excellent. That is the best definition, I would say. So this chapter is very underrated. Normally, we as a teacher, हम भी कहते हैं यार moles पढ़ लो, like organic chemistry पढ़ लो, or bonding पढ़ लो, तो you will get 40 or 50% of the paper. But I tell you, this chapter called chemical reaction, which have three important parts: rate of reaction, reversible reaction, and redox reaction, is more important than any other chapter in chemistry. Honestly, क्यों ऐसा है? ये बहुत आसान है और इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे बाकियों से. हो सकता है ऑर्गेनिक में से इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए, लेकिन ऑर्गेनिक की लेंथ भी बहुत ज्यादा है. पॉसिबल है कि एसिड बेसिस में से इससे ज्यादा मार्क्स का पेपर आए, बट एसिड बेसिस सॉल्ट इज अ ह्यूज चैप्टर. इसका एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी इजी. यू ऑल नो अब्दुल्ला, वी स्टार्टेड विद रेट ऑफ रिएक्शन. आप सबको फिंगर टिप्स पे याद है 5 फैक्टर्स. सो स्टार्टिंग विद ज़ैनब, कैन यू हेल्प अस revising all 5 factors? Just tell the names, Zainab. Affect the rate of reaction. Dr. Zainab, please. Temperature, pressure, concentration, surface area, size of the particles. And one is left, starts with C. Catalyst. Catalyst. So we have 5 factors that affect. I want everyone to open the notes of chemical reaction. Everyone, boys and girls. मैंने वैसे रिमाइंडर भेजा था आपको. मैं आपको तंग करता रहूंगा इंशाल्लाह, even if there's a weekend or there's regular days, but it's up to you कि how you people are like serious in your studies. And I tell you, जो बच्चे ये सेशन में रेगुलर रहेंगे, पास पेपर्स करेंगे, आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी इन योर दिसंबर एग्जाम्स. मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टी से कहता हूँ कि आप दिसंबर एग्जाम में सब कुछ आता होगा आप, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी सी एफर्ट भी तो चाहिए ना यार. ऐसे थोड़ी ना होगा. Where is chemical reactions? I think ये है. So we did 5 factors. So now I want Ali Shiraz to respond. We have 5 factors which affects the rate of reaction. Which factor lowers the activation energy of the reactant particles and produces more product per unit time? So which factor lowers the activation energy? That's the question, Ali. Catalyst. Excellent. Now, which factor? Nile, which factor affects the average energy of the particles? Dr. Nile. Shabash. Sir, could you repeat the question? Which factor out of those 5 factors affects the average energy of the particles? Sir, temperature. Temperature. So which factor only applies to gases, Anaya Janzib? It's the pressure. It's the pressure. I don't know what's wrong with my earbuds. Abhi to theek chal rahe the. Am I still audible? Yes, you're still audible. पता नहीं कोई नई चीज हम ले लेना, हमें यूज भी नहीं करनी आती ना, मसला ये. अब एक से आवाज आ रही है, फिर बाद में इससे आती, कुछ पता नहीं क्लिक हो गया शायद. चले इसी से काम चलाते हैं, फिर मैं सीख लूंगा स्लोली एंड स्टडी. ओके, सो द सेकंड टॉपिक हो गए. उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सो कौन बताएगा हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन? जस्ट नेम द मेथड्स. वी लर्न 2 मेथड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन. कैन यू नेम द मेथड्स? यस, अनाया जानसे. We measure the amount of volume produced, and we also measure the amount of mass that is lost in the reaction. Okay, Zainab, जल्दी से हमें बताएं, Zainab, what piece of apparatus is required in both methods? एक वो apparatus है जो दोनों में चाहिए होता है. What's that apparatus?
Conical flask? No, ma'am. Conical flask इसमें हम कर रहे हैं, conical flask के अलावा भी कुछ हो सकता है. Yes, Ahsan Aziz, मोहम्मद Ahsan. Stop clock, ठीक है. यार ये आज पंगा कर रहे हैं मेरे एयरपोर्ट्स. ठीक है, anyhow, चला लेंगे काम. So now the next topic, ready for the questions, starting with the छुपा रुस्तम, the silent observer like me in the class is, आज की क्लास में silent observer है Noor and Shamin. So question is from Dr. Noor. Noor, what is a reversible reaction? How would you define the reversible reaction, Dr. Noor? It's a chemical reaction that proceeds in both ways, forward and backward. Okay, Noor, आप ही हमें बताएं, what's a dynamic equilibrium and how it is established? What's the minimum condition to have to achieve the dynamic equilibrium? In the dynamic equilibrium, it's like a stage at which the rate of the forward and the backward reaction will be equal, and the condition is that the system must be closed. Excellent. Why the system has to be closed, Noor? So that the gases may not escape. Okay, so features. Let's start with Shamin. Shamin, once the equilibrium is established, what are the features to achieve of that equilibrium possess as long as the system is at equilibrium? What are the features, characteristic features of that dynamic equilibrium, Shamin? The rate of the forward and backward reaction are equal, and at the equilibrium, the concentration of both reactants and products does not change; they stay the same. Yeah, so at equilibrium we have the concentration does not changes, rates are equal, but we can do panga with the equilibrium by changing the three conditions, either the temperature or the pressure or the concentration. So सबसे जो बच्चे जिसमें जो फोबिया है बच्चों को वो टेम्परेचर के फैक्टर से, आई डोंट नो व्हाई. हमने इसको बड़ी डिटेल में किया था, एक बार फिर से बताऊंगा. Whenever it's the question is about temperature, the first thing you should check is the type of the reaction, whether the reaction is exo or endo. If the reaction is endo, which means the enthalpy is positive. If the reaction is endo, that means this has to be positive. If the reaction is exo, this delta H has to be negative, right? So if the reaction has a positive delta H, then वो आपको दो चीजें कह सकता है, या तो वो कहेगा टेम्परेचर इंक्रीज किया या कहेगा डिक्रीज किया. If delta H is positive and temperature is increased, the equilibrium goes to the forward direction. सब अपने दिमाग में बैठा लो ये बात. एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I audible now? Yes, sir, you're audible now. Am I audible now? Yes. Yes. Am I audible now? Yes, sir, you are. मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir. I can see कि आप लोग बोल रहे हैं, बट आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? ये क्या मसला है भाई? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है. आई नो आप बोल रहे हैं, आपकी स्क्रीन को है, बट मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही. क्या मसला है? हेलो हेलो.
तो फिर आपकी आवाज किधर गई, क्या हो गया है? चले, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? मैं इसको चेक करता हूँ, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आप लोगों की मेरी आवाज आ रही है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी के लिए यू कैन टाइप इन द बॉक्स. So let's get started with the redox reaction. So, you know, we were talking about the factor that affect the reversible reaction: temperature, pressure, and concentration. How does the temperature affects the equilibrium? You must need to check the delta H. If it is positive, you then check if the temperature is increasing or decreasing. If the delta H is positive and you are increasing the temperature, the equilibrium moves to the right side to absorb the excess heat. That's it. Because the forward reaction is endothermic. And if you decrease, it goes to the left side. As the forward is endo, backward should be exo. So to compensate the effect of low temperature, backward reaction is favored, right? And this is 100% similar, 100% same, apart from the direction. Because any reaction which have negative delta H, uska forward is exo, or usi ka backward has to be endo. So whenever you increase the temperature, endothermic direction is favored. Positive में endo होती है right वाली, और negative में endo होती है backward वाली. Look at this reaction. इसमें endo है backward वाली, और इसमें increase से backward जाएगा, decrease से forward जाएगा. So reason मैं आप सिर्फ ये लिख दिया करो to compensate the effect of low या high. Pressure में you all know it's only applicable to gases. Whenever you increase the pressure, equilibrium move to the side with lesser moles of the gas. सिर्फ lesser moles नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है lesser moles of gas, because moles तो किसी और चीज के भी हो सकते हैं ना. Look at this example. इसमें total तो 2 moles है, लेकिन हमने तो सिर्फ gas के ही देखे ना. So always write the total complete word. Equilibrium move to the side with less moles of gas to compensate the effect of high pressure. अगर increase कर रहे हैं, or if you are decreasing the pressure, equilibrium goes to the side with more moles of gas to compensate the effect of low pressure. That's it. Now the concentration, whenever you change the concentration, it goes to the side with low concentration to to compensate the effect of change in concentration on one side, और high concentration on one side, और low कुछ भी लिख दो, सब कुछ acceptable है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशंस. उसमें 2 एप्लीकेशंस है. वी हैव हेबर and we have contact process. In Haber process हमने उस दिन डिटेल में किया था. अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आप सबको. Those of you who were trying to join to watch those recorded lessons, for all of you, जब भी आप बेटा रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करते हैं, 2 चीजें आपने मेक श्योर करनी है. एक तो आपकी ईमेल जो आपने मुझे दी है वहां पे रिकॉर्डिंग आएगी. जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जिस सिस्टम में, फॉर एग्जांपल आप इस टैब में उसको क्लिक कर रहे हैं, तो इस टैब के अंदर जो गूगल अकाउंट है ये वही ईमेल होनी चाहिए. अब मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अभी ग्रुप में भी एक बच्चे ने कहा है, वैसे भी इनबॉक्स में मुझे कहते हैं कि सर दैट इज नॉट विजिबल. वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप ईमेल तो वो वाला उससे ईमेल की इनबॉक्स में जाके वो मैसेज तो क्लिक करते हैं, बट उस डिवाइस में वो गूगल अकाउंट कोई और ईमेल लगा हुआ है, won't work. So it has to be the same Google account, and of course inbox तो आप वही उसी का चेक करोगे ना. I hope आप सबको क्लैरिटी हो गई इस पे रिकॉर्डिंग पे. So Haber process. आज मुझे आप किसी की आवाज नहीं आ रही. I don't know what's wrong. Haber process में we make ammonia. अमोनिया का फर्टिलाइजर है. अमोनिया को आप वो पटाखे बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज कर सकते हैं. Raw material to make ammonia is the nitrogen and hydrogen. What is the source of nitrogen? Air is the major source of nitrogen. The source of hydrogen is hydrocarbon and electrolysis of water or aqueous salts. Now, this is the simple equation. It's a reversible reaction, and the conditions to produce ammonia at a good rate is 450 optimum temperature, 200 optimum pressure. Iron 3 oxide is the name. Why I put 3 with iron? Anyone in the class? I know I can't hear you, but for others, why there is a 3 next to iron? It is because iron is a transition element. So iron का कुछ भी चार्ज हो सकता है. तो how to, हमें कैसे पता चलेगा क्या चार्ज है? तो whenever there is a transition element, you put the charge next to that name of that element in Roman. क्योंकि iron का तो +2 भी हो सकता है, right? So इस वाले iron का चार्ज क्या है? +3. Iron 3 oxide act as a catalyst. How to maximize the yield under what condition? So since the enthalpy of this very reaction, is negative,
which means forward reaction releases heat. So an increase in temperature shift the equilibrium to the backward direction. So we want a low temperature so that equilibrium remain on the right and you will get more and more ammonia. But we cannot decrease the temperature further. If you decrease the temperature further, it will decrease the rate of reaction. देखो मैंने कहा था टेम्परेचर कम कर सकते हो लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि it will decrease the rate, take more time. The second factor condition you should maintain is the high pressure. आप 200 पहले ही बहुत high use कर रहे हो. You can use even more, but maintaining the high pressure is expensive and we all are गरीब. बहुत महंगे ये चीजें हैं, like maintaining the high pressure. So we are Pakistani. We will manage somehow with second-hand devices. तो हमने second-hand चीजें purchase की हैं to make more ammonia. But अगर हम ज्यादा pressure use करेंगे तो it will be very costly, not cost effective. Industry में आप जो भी चीज बनाते हो, if you are the owner or CEO, आपने सबसे पहली चीज देखनी है profit. आपने ये नहीं देखना कि मैं कितनी quality की चीज produce कर रहा हूँ. Of course, industrialist end product जो उसका होता है, end product वो देखता है कि eventually, ultimately मैंने कितना earn किया. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो $100 उस पे लगाए और 90 earn करे. Make no sense. So eventually तो वो बंद ही होगी ना. So how can we increase the production if we are not changing these conditions, not decreasing the pressure, not increasing the not increasing the pressure or not decreasing the temperature? How can we maximize the yield? We can change the concentration. You can keep on removing the products, which is ammonia. So if you remove the ammonia, ammonia will remain low and the equilibrium will remain on the right side, since a change in concentration shifts the equilibrium to that side where we have low concentration. So first thing that you can do, you can remove the ammonia. Just ammonia बनी निकाली, इससे पहले कि वो वापस जाए, आपने वापस जाने नहीं दिया, आपने पहले ही निकाल ली, वापस तो जाएगी नहीं बेचारी, तो फिर और बनेगी, फिर वापस जाएगी, आप फिर पकड़ लोगे इसको. So first thing, keep removing ammonia. Second thing, keep adding more and more reactants. So when you will add more reactant, the concentration of reactant will remain high and equilibrium again will remain on the right side. You will get more ammonia. ज़्यादा बनेगी तो निकालते रहोगे. So by not changing the pressure and temperature, you can still maximize the yield of the products by removing the products, by adding the reactants. This is your favorite contact, क्योंकि हेबर तो मेरा favorite है. Contact में you make king of chemicals. What do we call this very molecule? Sulfuric acid. It is used as an acid in car batteries. It is used as a solvent. इसको वो cleaner के तौर पे भी use करते हैं, metal की surface को clean करने के लिए भी we use the same acid as a raw material for the fertilizers. ये भी use होता है. So what is the raw material to make molecule called H2SO4 sulfuric acid? You need sulfur. You need, of course, air, which specifically oxygen, water, and already prepared sulfuric acid. So what are those chain reaction? 4-step reaction. In the first, you will burn the sulfur, you get sulfur dye. In the second, you burn the sulfur dye further. That second reaction is extremely important. You get sulfur trioxide. And in this very step, look at this step. It is the only reaction out of all 4 which is reversible. And you put all the temperature, you use all the conditions, and vanadium 5 oxide is the catalyst here. So you get sulfur tri. Sulfur tri is mixed with sulfuric acid. You get oleum, H2S2O7. In the final step, oleum is mixed in water to get you sulfuric acid. I hope this is clear, right? Yes. Okay. Now, today, we need to start with the third part of this very chapter called redox reactions. And inshallah, right after this, we will be starting with technical, challenging chapter, which most of the people say it's a challenging. इस chapter के बाद वो हमारे लिए easy हो जाएगा. So anyone who is struggling with electrolysis, moles, or acid-basis salts, he or she must join. So redox reaction. First of all, let's define redox reaction. So I want everyone to listen and to note a chemical reaction in which both oxidation and reduction takes place. So a reaction in which both oxidation and reduction takes place
is called a redox reaction. Now, what is oxidation and what is reduction? This is important. So first of all, a redox reaction is one in which oxidation and reduction happens simultaneously at a time. So what is oxidation, boys and girls? Let's define oxidation first, and then reduction side by side. Oxidation is gain of oxygen. Reduction is loss of oxygen. Oxidation is loss of hydrogen. Reduction is gain of hydrogen. Third and very important, जो सबके लिए applicable होगा, जो असल जिसके questions आए, that's the third one. चलो मैं जरा अपना favorite color select कर ही लूँ. ये लो भाई. I mean this वाला blue is my favorite, but not this वाला shade. फिर dark कर ले. ये वाला कर लेते हैं. So this is decent blue. Okay. So oxidation is loss of electron. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. That is important. And whenever any particle loses electron, that process is called oxidation. Right? ये तो बल्कि ऊपर बता दिया ना. उसको हम कहते हैं other words में, जब किसी चीज कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, राइट? सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. एक लूज करेगी 1 पॉजिटिव, 2 लूज करेगी 2 पॉजिटिव, यू नो. सो whenever, for example, we have sodium, it is in group 1, it generally loses 1 electron, तो चार्ज आ गया 1 प्लस. देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर. अब यहाँ पे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इट इज 0, और यहाँ पे इस पे आ गया 1 प्लस. तो मुझे ये बताओ, इसका चार्ज इंक्रीज हुआ? बिल्कुल हुआ, 0 था प्लस 1 प्लस हो गया. An increase in the charge, that is the same thing which is called loss of electron, लेकिन इसको हम लिख देते हैं increase in oxidation number. Increase in oxidation state. So whenever there is a loss of electron, there is an increase in the oxidation state. What is oxidation state? It is the charge on the particle. Charge plus में भी हो सकता है, negative में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. So whatever that charge is called oxidation state of that particle, right? So increase in oxidation state is oxidation. Decrease, मेरे spelling पे आपने trust नहीं करें. Decrease in oxidation state is called reduction. Make sense, everyone? Right? So for example, we know that chlorine, चलो मैं एक क्लोरीन लिख देता हूं अभी के लिए. There is no charge on chlorine, so we assume 0. So when this very chlorine accepts 1 electron, we know it becomes chloride. So it goes from 0 to -1. The charge is decreased. We say that the oxidation state has decreased. So reduction takes place. Reduction has occurred. So now we can clearly draw a line between oxidation and reduction. Oxidation is the gain of oxygen, reduction is loss. Oxidation is loss of hydrogen, reduction is gain. ये last two असल में एक ही चीज है. Loss of electron, जब भी loss of electron होगा तो increase in oxidation state होगा, उसको oxidation कहेंगे. Whenever there is a gain of electron, जब gain of electron होगा तो decrease in oxidation state होगा, उसको reduction कहेंगे. Let's define oxidation state for you know. So what is oxidation state? Apparent charge on a particle is its oxidation number. Apparent charge. On any particle. When I say particle, it refers to atom, ion, or molecule. Right? So oxidation number is the apparent charge on an atom. आप simply ये कह सकते हैं. Important चीज इस चैप्टर में एक ही important चीज है जो अभी हम पढ़ेंगे.
So please, for the next 5 minutes, I want everyone to listen very closely. We are now going to learn the rules to assign the oxidation numbers. तो ये जिसको आते हैं उसको ये वाला पार्ट आता है, I mean ये चैप्टर आता है, which is redox reaction. So there are important 2 rules हैं, थर्ड वाला है लेकिन कभी आता नहीं है, लेकिन हमने पढ़ने तो तीनों हैं. पहला रूल ये है, रूल सुने सब लोग. आई होप, मैं तो आपको नहीं सुन पा रहा लेकिन आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं. ऐसे ही है नाया जहां से, है ना? ठीक है. Yes, sir. थैंक यू. मुझे आवाज नहीं आई लेकिन स्क्रीन पे नजर आ गया कि आपने यस बोला है. सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रूल, तीनों इंपॉर्टेंट है बट 2 हैं जो ज्यादा यूज होंगे. नंबर 1, पहले एग्जांपल करेंगे फिर हम रूल, हम रिवर्स चलेंगे. लोग पहले रूल पढ़ते हैं फिर एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल देन रूल. सो व्हेनेवर यू सी एनी पार्टिकल लाइक दिस, जो अकेला लिखा, like this, whenever you see any particle written single, अकेला लिखा, उसका आपने assume करना है चार्ज as 0. तो जब भी कोई अकेला लिखा हुआ है उसका चार्ज क्या assume करेंगे हम लोग? The charge has to be 0. Also, whenever, ये तो metals है, metals तो हमें अकेली लिखी होती है, जब उसने बॉन्ड नहीं बनाया तो they are like giant है तो सिंबल लिखा होगा. But whenever we have a non-metal, for example, you have oxygen. Oxygen का formula क्या है? It's O2. You have chlorine, Cl2. You have nitrogen, N2. You have ozone, O3. We have hydrogen, H2. Whenever you have, इन सब में एक चीज, एक सिमिलैरिटी है. कोई देख रहे हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी है? इन सब में क्या सिमिलैरिटी? चल यार, मुझे आवाज नहीं आ रही लेकिन सबके लिए बता दें जरा. इसमें सिमिलैरिटी ये है, अगर ये कि these are molecules. And all of these molecules made up of same type of atoms. This is oxygen molecule. इसमें 2 atoms हैं, both are of oxygen. This is chlorine molecule. 2 atoms, both are of same element. 2 atoms of hydrogen, same. 2 atoms of nitrogen. So these are called homoatomic molecules. इनको क्या कहेंगे सबको? Homo. आज कोई टेक्निकल फॉल्ट है भाई, मैं आप सबको मेरी आवाज आ रही है बट मैं आपको सुन नहीं पा रहा, पता नहीं ये बीच में कुछ हुआ है. सो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स. कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स. इसमें देखें जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं उन सब में सेम टाइप के एटम्स हैं ना. सो रूल 1 अभी चल रहा है. रूल 1 के अकॉर्डिंगली then we should write because I can't listen. Rule 1 के accordingly, whenever you see any single element, उसका तो हमने 0 decide कर लिया. Whenever you have any molecule with same atoms, उनका भी charge क्या होना है? 0. This is rule 1. सबको समझ आ गई rule 1? Should I write? So atoms and homoatomic molecules have a 0 oxidation number. Yes, that's rule 1. Anyone in the class? So Zainab, you should write something in the chat. I actually can't hear anyone today. I don't know why. So I hope the rule 1 is clear. Okay, done. So rule 2 is rule 2. Let's first consider an example, then we will write the rule 2. According to rule 2, हाँ ग्रुप में उसमें तो होता ही है कि उसके लिए तो होमोएटॉमिक तो पहले से बेचारा होमोएटॉमिक है, उसके लिए तो वी कांट यूज होमोएटॉमिक बिकॉज़ हीलियम इज ऑलरेडी He. तो इट इज होम, इसको तो मोनोएटॉमिक कहते हैं, सिंगल एटम मॉलिक्यूल. तो He2 तो नहीं है ना, तो होमोएटॉमिक उनके लिए यूज करते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो और वो सेम टाइप के हो, लाइक ऑक्सीजन, लाइक हाइड्रोजन. 2 atoms and both are of hydrogen. So that's a good question. Rule number 2, according to rule 2, we have some examples in which you have different atoms, like this compound. So for such kind of such substances where we have different compounds, what is the charge on the sodium, on the chlorine? For example, we have an example
of a very famous oxidizing agent इसी chapter में पढ़ेंगे. We have let's say copper sulfate, इसमें देखेंगे, you know, and we have magnesium oxide. So whenever you have substances, ionic compounds or molecule contain different atoms, then what is the rule? How to decide the charge on each atom? So here, since you see that overall there is no charge on NaCl, NaCl seems to be a neutral compound. It is a neutral compound, so we assume the overall charge as 0. We assume overall charge as 0. I hope the screen is not frozen. It's visible. Is it visible? Yes, Anaya and everyone. Thanks. Yes, sir. Whenever we have different atoms, the overall charge, we must assume the overall charge as 0. But the individual charge on sodium and chlorine is not 0. So then how to make overall charge as 0? We have to add the oxidation number of all the atoms present in a compound, and the sum of those charges must be equal to 0. So all the people live in group 1, they have their oxidation number according to their group 1. So their oxidation number is +1. To make it 0, overall 0, chlorine has to be -1. हो गया 0 overall? हुआ 0? Okay. Magnesium group 2 में है, ये +2 होगा. Oxygen -2 होगा, overall 0 हो गया. So आपने overall 0 करना है. ठीक है, ये भी मैं कर देता हूँ, वो आप करेंगे. अच्छा चलें, ये मैं कर देता हूँ. Oxygen जहां भी होगा -2 कर दो. 4 of them -8 हो गया. अब हमने overall इसको 0 करना है. ठीक है. कॉपर, अच्छा इसका नाम है कॉपर 2 सल्फेट. ठीक है. सो कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल. यहां पे कॉपर का चार्ज +2 है. अगर कॉपर +2 है और ऑक्सीजन का एक का -2 है, 4 का -8 हो गया, तो सल्फर का क्या होना चाहिए टू ओवरऑल 0 करने के लिए? इट हैज टू बी प्लस, कितना प्लस होना चाहिए? +6. ठीक है. सो इफ दिस इज +6, आई वांट एवरीवन टू ट्राई KMnO4. Get the charge of manganese, it's a transition metal. Also, I want everyone to try K2Cr2O7. Get the charge of these underlying particles. Of course, आपने सबका find करना है, make it 0. But these two underlying particles are transition. इन सबका आपने अभी find करेंगे charge in another lesson 1 minute. Apply rule 2, make it overall 0 oxygen. Wherever you see 1 oxygen, it has to be -2. But look, in KMnO4, we have 4 oxygen. In the other example, we have 7 oxygen. So mind it. Consider those as well. $20 seconds. Actually, I want it to complete this chapter today, but I think हमने revision पे ज़्यादा time लगा दिया. चलिए कल हो जाएगा. Then we will be having 2 more lessons to do the past papers, inshallah. कर लिया सबने? Okay. So 1 oxygen is always -2. We have 4 oxygens, तो 4 का कितना हो जाएगा? -8. Overall तो 0 करना है हमने. Potassium group 1 में +1. तो फिर Mn का क्या होना चाहिए कि overall charge 0 हो जाए? क्या लिखूं पोटेशियम मैंगनीज का? +7 लिख दूं? ठीक है, सबने ये लिखा, राइट? ओके. 1 oxygen is -2. 7 of them are -14, राइट? थोड़ा सा इसको नीचे ले जाते हैं ड्रैग करके, little bit. Okay, so this is -14. 1 potassium is +1, so 2 of them has to be +2. ठीक है. अब मुझे बताएं कि क्रोमियम का क्या लिखूं? क्या चार्ज है क्रोमियम का टू मेक ओवरऑल 0? एक का +1 है, 2 का +2 हो गया. पोटेशियम की बात कर रहा हूं. ऑक्सीजन 1 is -2, 7 is -14. So 1 chromium has to be +6. होना चाहिए +6. Yes or no? जिन बच्चों ने +12 लिखा है उनका नंबर माइनस हो गया, बिकॉज +12 तो 2 लोगों का है. 2 क्रोमियम का +12, यस होगा ओवरऑल +12 भी, लेकिन जब वो आपसे 1 का पूछेगा तो आपने 1 का बताना. सो 1 chromium has to be +6.
2 of them must be plus 12, and then plus 2 plus 14 and minus 14 overall charge is 0. That's how you are going to apply the rule 2. So let me define the rule 2 here. The sum of oxidation numbers of all the atoms. So sum of oxidation number of all the atom in a compound must be equal to 0. That's rule 2. Must be equal to 0. Make sense, everyone? And we actually use these very examples to understand this very rule. Third rule is very easy. It is for the complex ions. So you all know that we have complex ion in our syllabus. For example, you have hydroxide. अब hydroxide is not OH. Hydroxide ion के ऊपर charge है -1. So whatever the charge, जो भी charge है, हमने इनके oxidation numbers को ऐसे add करना है कि this time the result of those addition must be equal to the charge on the particle. Now we know one oxygen is -2. So overall answer -1 आना है, तो hydrogen को क्या लूंगा मैं +1. So you have to add the oxidation number in such a way that the overall answer must be equal to the charge on it. इसका charge -1 था, देखो आंसर भी -1 आया. Okay. नाइट्रेट का ट्राई करें जरा सब लोग. इसका overall charge -1 है. So add the charges of these two particles in such a way that the answer has to be 1 minus. इसी तरह I want everyone to try for sulfate, for ammonium. Try करें शाबाश. For phosphate, these are all for carbonate. Shabash. 2 minutes, and that's the end of the class. So add the oxidation numbers of every atom in such a way that the overall charge must be equal to 2 minus for sulfate, 1 minus for nitrate, +1 for ammonium, -2 for carbonate, 3 minus for phosphate. कर ली एग्जांपल्स नोट सबने. चले अमोनियम का मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना आफ्टर क्लास. ओवरऑल चार्ज मस्ट बी +1. वी नो हाइड्रोजन इज +1. कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास? 4. तो ये हो जाएगा +. अब मुझे नाइट्रोजन का चार्ज क्या एज्यूम करना चाहिए कि ओवरऑल आंसर +1 आए? आई मस्ट एज्यूम -3. देखो -3 एज्यूम करेंगे तो ओवरऑल आंसर +1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा. मेक सेंस एवरीवन? यस. ये भी कर लेते हैं. 1 ऑक्सीजन इज -2, 3 ऑक्सीजन है तो ये -6 हो जाएगा. अब ओवरऑल आंसर तो 2 आना है, -2. तो फिर कार्बन का क्या एज्यूम करूं? +4 एज्यूम कर लूं? यस और नो? देखो +4 और -6 is always 2 minus, right? So today we've started with a new chapter called redox reaction. It's extremely important to understand the next chapter, which is electrolysis. So redox is where you have both oxidation and reduction. Reduction is loss of electron. Reduction is gain of electron. Oxidation is loss. 2 important rules here to assign the oxidation number. Rule number 1, wherever you see any atom or homatomic molecule, oxidation number is 0. And rule 2 is whenever you see different atom, the sum of oxidation number is equal to 0, but individually they are not 0. See you tomorrow, same time, with the detailed version of electrolysis. Allah Hafiz. Basically, I can't hear you.